characters, plot. Okay, these are the basic parts of a story. Characters, plot, setting, style, theme. Characters, जब कोई राइटर कहानी लिखता है तो उसमें कुछ करेक्टर बनाता है, उसको नाम देता है. प्लॉट, द सीरीज ऑफ इवेंट, मतलब सबसे पहले क्या होगा कहानी में, उसके बाद क्या होगा, एंड कैसे होगा, स्टार्ट कैसे होगा. सो वो इवेंट्स की जो सीरीज है, इवेंट की जो तरतीब है, वो प्लॉट कहलाता है. सेटिंग, सेटिंग मीन्स स्टोरी का कौन सा हिस्सा कहां पे है, मीन्स द प्लेस. राइटर लिखकर आपको जो जगह दिखाना चाह रहा है, इस वक्त जब ये कहानी में ये काम हो रहा था, उस वक्त सुबह थी, शाम थी, कौन सी जगह थी, कौन सी लोकेशन थी. सो बेसिकली लोकेशन ऑफ द स्टोरी इज कॉल्ड इट्स सेटिंग. स्टाइल, राइटर का अपना स्टाइल, वो जिस वे में लिखता है, मीन्स वो कैसे वर्ड्स यूज करता है, कैसे बात करता है. थीम, अगेन एज वी हैव डिस्कस्ड इट बिफोर, थीम इज द वे टू डिस्क्राइब अ सब्जेक्ट of a writer. And crisis means you can say हर कहानी का एक peak point होता है, एक complex time होता है, जिसके बाद फिर कहानी solve होना शुरू हो जाती है. So these are the basic parts of a story. Now why I had to discuss this, because this is a theme number 1 and here is a picture. Okay, so first task is you have to describe the picture. Description और narration का फर्क मैंने आपको बता दिया. You have to describe this picture. इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए you have to write 5 to 10 sentences and see the picture and describe it in your own. And the second task is look at the picture above and answer the following questions. And today we do the first question. What is the setting of the picture? As I said earlier, the setting means the location, the area and the time. कहानी में जो वक्त है वो उस वक्त क्या वक्त था और किस जगह पे वो कहानी जो है वो लिखी गई या किस जगह को दिखाया जा रहा है. सो दिस इज कॉल्ड सेटिंग. सो आपने यू हैव टू डिस्क्राइब, यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय योर ओन. सो व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पिक्चर? द सेटिंग इज near a river and the time is noon because sun is over there, so we can say it's a sharp noon, and the place is near the river. How can you tell that it depicts a folk or fairy tale? Now you have to describe either it is a folk tale or a fairy tale. In a fairy tale, we have some magical events, and in a folk tale, there is a story that passed by our ancestors. हमारे माँ बाप के जरिए जो कहानी जुबानी हम तक पहुंचती है वो folk tale होती है, और fairy tale वो होती है जिसमें कुछ magical हो. तो आप देख रहे हैं कि ये magical है, कुछ हो रहा है. The monkey is communicating with the crocodile. Monkey crocodile के साथ communicate कर रहा है. It's not happen, it cannot happen in real life. ये real life में नहीं हो सकता. So it's a fairy tale because it's a magical story. The third one is how can you tell that it might involve magic or the supernatural? The answer is again in second question, because the monkey is communicating or talking with crocodile and it's not possible at all. Describe everything you see in the picture. Now this is we have done already. You have to describe this picture. Can you guess the name of the story? Find out the name of the story, and you have to give name to this story by your own. The last is and read it if you are not familiar with it. So you have to make a story and then you have to name it. So that was your work. You have to answer all the questions by your own, and in our next lesson we will move to what. Thank you.